देखाउची अच्छा अच्छा एटा टिके लेख आरथरक गोटे जिंस टिके मु जोटा कहतली टिके हमें ताको देखिबा गोटे टिके चेंजेस अछि तो मिरर विषय रे हमें पढ़थिले कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर केते गोटे साइन कन्वेंशंस जो नैथिले मिरर फार्मूला हम कहतली 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f where v is the image distance ba I mean di okay and u is equal to object distance is equal to d o okay same जिंस तो एटा जो मिरर फार्मूला में रिप्रेजेंट करथिले विभिन्न साइन कन्वेंशंस नैथिले while solving the spherical mirrors parallel ray reflects through the focal point देखो parallel ray सब बेले जाई फोकस देकरी रिफ्लेक्ट करिवो तापर फोकल रे रिफ्लेक्ट्स parallel to the axis ए फोकल रे आसिला एम्ति गला parallel to the axis एवं सेंटर ऑफ कर्वेचर रे रिफ्लेक्ट्स बैक अलोंग इट्स इनकमिंग पाथ सेंटर ऑफ कर्वेचर देकरी जदी पास करछि ए सब जिंस हम पढिछे अच्छा गोटे जिंस हमको एठी जो साइन कन्वेंशन नैथिले टिके गोटे चेंज हबो हम कहूची अच्छा डीओ माने कोन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बा तमे एटा कोनो नियो u is positive if the object is in front of the mirror okay u is positive if the object is in front of the mirror do माने object distance is negative do is negative if the object is in the back side of the mirror ता अर्थ कोन suppose it is a एटा कोन concave mirror अछि हैला if it is in the front side of the mirror ता अर्थ कोन लेफ्ट साइड तो एटा को हमें एठी कंसीडर करियो हैला ए मिरर रो फ्रंट साइड रे जदी अछि ऑब्जेक्ट सो इट इज पॉजिटिव ओके आउ जदी मिरर रो बैक साइड रे अछि ता माने नेगेटिव मु सेटा कोन कहथि तुमको जदी राइट लेफ्ट कथा एंदी कहथिली जे राइट साइड ता पॉजिटिव और लेफ्ट साइड ता नेगेटिव सेमति नबानी हमें ताकू टिके आउ टिके माने बेटर वे रे देखिबा ओके साइन कन्वेंशंस विभिन्न बही रे विभिन्न जगह रे विभिन्न साइन कन्वेंशंस यूज हेई थाए हमें हमर कन्वीनियंस अनुसार हमें जदी देखिबा so semti di is positive if the image is in the front side of the mirror and di is negative if the image is virtual or behind the mirror image कथा तुम माने जानि छ जे जदी front side of the mirror रे image real image जदी formation होची whenever there is a real image form inside through a mirror so the image distance is positive you have to take whenever a virtual image is formed okay so image distance is negative बुझियला किछ कंफ्यूजन अछि जदी कार को object distance is positive if the object is in front of the mirror it are a mirror रिफ्लेक्टिंग सरफेस टा को पटे ए बाहर पटटा होची ये कोन नॉन रिफ्लेक्टिंग भीतर पटटा होची रिफ्लेक्टिंग तो जदी ऑब्जेक्ट टा एठी अछि दिस साइड सो यू टेक do to be positive if object is in the back side of the reflecting surface you take do as negative एका कथा हमें जतले ए इक्वेशन को जीवा ए जो प्रथम इक्वेशन को से एका जिंस होई जो हला सिमिलरली
image is positive if the image is in the front side of the mirror. ओके इमेज जदि रियल इमेज माने कोन मिरर रे म कहतली इमेज जो ऑब्जेक्ट जो पटे ऑब्जेक्ट जिस तरफ है इमेज अगर उसी तरफ है सो देन इट इज कॉल्ड एज ए रियल इमेज ओके इसी नाही छड़ ऑब्जेक्ट जो पटे इमेज जदि सेही पटे हबो मिरर केस रे इमेज जदि सेही पटे हबो देन द इमेज इज कॉल्ड रियल इमेज जदि ऑब्जेक्ट जो पटे तार ऑपोजिट साइड रे हबो इमेज then the image is called virtual image. So please kindly you remember these sign conventions. एटा टिके हमको एडवांस प्रॉब्लम सॉल्व कला को काम रे आसीबो सेटा जोटा कहतली सेटा टिके ताको टिके चेंजेस आसी हैला एई भलिया हम मन रखले हमको लेंस मते मन रखिया पे सुविधा हो सेति में एटा कहली तमु जोटा कहतली मिरर पई सेटा भी पकेइले हबो एमति नै कि हबोनी किंतु एटा टिके आ टिके एडवांस वे मु कहूची हैला so focal length is positive for concave mirrors or real images मु कहली जो फोटो साइड रे रियल इमेज फॉर्मेशन हबो सेटा को हमें पॉजिटिव नबा से लेफ्ट साइड हो राइट साइड हो बट सेटा को हमको नबा पड़ियो पॉजिटिव अच्छा जो फोटो साइड रे फोकल लेंथ इज नेगेटिव फॉर कन्वेक्स मिरर रो फोकल लेंथ ता इजबो नेगेटिव कन्वेक्स मिरर पई कोटा रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर पटटा रिफ्लेक्टिंग सरफेस भीतर पटटा ए रिफ्लेक्टिंग हां भीतर टा होची पेंटेड सरफेस ओके सो फोकल लेंथ इज नेगेटिव फॉर कन्वेक्स मिरर काहे कि कन्वेक्स मिरर रे सब बेले वर्चुअल इमेजेस फॉर्मेशन बुझियला वर्चुअल इमेजेस माने ऑब्जेक्ट जो पटे इमेज से पटे फॉर्मेशन हुए नहीं अच्छा focal length is positive for concave mirrors by real images okay so these are the sign conventions which you have to always use while solving mirror problems and तुमको क्वेश्चन रे देइथिबो एमती लाइक एमि देइथिबो a object is placed towards right side from the center of from the pole जोटा को हमें कहते from the pole of a concave mirror at a distance 10 centimeter okay focal length of the mirror is equal to 6 centimeter माने करो कहिछि हला focal length of the mirror concave mirror is 6 centimeter and object is placed towards the right side of the pole of a concave mirror at a distance 10 centimeter find the image distance from the pole हला हमें जदी एटा गोटे कॉनकेव मिरर अछि ऑब्जेक्ट ता कोठी अछि राइट साइड 6 सेंटीमीटर अछि एटी ऑब्जेक्ट अछि हला राइट साइड 6 सेंटीमीटर अछि ऑब्जेक्ट ता हला फोकल लेंथ एटी केते सॉरी राइट साइड 10 सेंटीमीटर अछि फोकल लेंथ देछि सपोज एटा होछि तार फोकस फोकल लेंथ ता देछि होछि 6 सेंटीमीटर अच्छा for a concave mirror what is the focal length मु एटी कहली the focal length is positive for concave mirror माने हमें कोन पकेबा f is equal to 6 पकेबा plus 6 ओके सेमती ऑब्जेक्ट टा को हमें एटी कोन करिबा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस टा को कोन पकेबा minus 10 पकेबा हला तो एबे हमें मिरर फार्मूला तापर पकेबो 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f तो एठी तमे पकाओ 1 by v plus जगह रे एठी माइनस हे जीवो एठी माइनस ऑफ
माने इटी टोटल हम एमती लिखि परिबा 1 by v minus 1 by एटा u टा हे जीवो केते 10 सेंटीमीटर ना 10 सेंटीमीटर इक्वल टू minus 1 by एटा कोन हे जीवो 6 minus 1 by 6 हेगला सो 1 by v टा को हम कोन लिखि परिबा एबे minus 1 by 6 plus 1 by 10 एटा को सॉल्व करिवो जहां आंसर बाहरिबो v टा जहां आंसर हमर बाहरिबो माइनस अच्छी कि पॉजिटिव अच्छी देखिकी हमको सेटा एबे पकेयु पड़िबो इमेज टा को पट साइड रे फॉर्मेशन हो यू कैन कैलकुलेट इट बाय दिस टाइप ऑफ माने रिलेशंस ओके अच्छा एबे हमें पढिबा एटा तो मिरर कथा गला जो माने एबे नुवा जॉइन करछो कोन पुनी 10 हे गेलेनी सर ये फोकल लेंथ -1/6 करवाला हां जो फोकल लेंथ पूरा पॉजिटिव हो कॉनकेव पे ओ सॉरी मु एटा भूल लिखली एटा पॉजिटिव हो so plus 1 by 6 हबो so that is plus 1 by 6 एटा पुनी plus 1 by 10 हेला तो v टा जति बाहरिबो that will be your answer okay तो सेमती जो माने बे नुआ जॉइन करछो एटा टिके एई स्लाइड टा टिके नले मु पठै देबी ग्रुप रे एई साइन कन्वेंशंस फॉर स्फेरिकल मिरर्स ओके सो एटा को हमको हां सर डीआई तो जो पॉजिटिव हबो ना सर वर्चुअल इमेज सदी ये हबो तमे एबे आसिलो की तुरंत हाँ मु सेटा कहउतली जे आमे जो आमे साइन कन्वेंशंस नेइथिले लास्ट क्लास रे हमको टिके चेंजेस करियो पड़िबो काहे ना जेतले लेंस आमे देखिबा तो लेंस देखला को जेमते हमको सुविधा हो मने रखिया पे मु जोटा कहितिली लास्ट क्लास रे ताहा भी गोटे प्रकार ठीक किंतु सेटा न मन रखी कि तमे एटा टिके एडवांस जिंसटा टिके मन रख सो दिस विल बी बेटर फॉर योर माने प्रॉब्लमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू हैला मु कोन कहली जे पैरेलल रे ई सब तो जानि छो फोकस देकी पास करिवो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ई सब देकी पास करिवो मिरर रो आमे जोटा कहितली ताको एईटा एई चारटा कि पांचटा साइन कन्वेंशंस हम मन रखिबा so object distance is positive if the object is in front of the mirror object is in front of the mirror so object distance is negative if the object is in back side of the mirror ओके एटा को हम मन रखिया पड़ियो तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस रो को पटोटा साइड टा फ्रंट एटा होची रिफ्लेक्टिंग सरफेस मन करो कॉनकेव पई एटा होची भीतर पटटा होची रिफ्लेक्टिंग सरफेस ता सामना रे ऑब्जेक्ट टा अछि जदी हमें ऑब्जेक्ट टा डिस्टेंस टा को डीओ टा को पॉजिटिव पकेबा ओके एंड जदी तार पछपट साइड रे अछि रिफ्लेक्टिंग सरफेस रो तबे हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस टा को नेगेटिव पकेबा बुझिलो वर्चुअल ऑब्जेक्ट जाकु कोआ जाय सिमिलरली image distance is positive if the image is in front side of the mirror image जो पटे ऑब्जेक्ट सेही पटे जदी मु कहितली रियल इमेज तो रियल इमेज जोटी फॉर्मेशन होची हमको इमेज डिस्टेंस टा को पॉजिटिव पकेबा जोठी वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन होची मिरर केस रे रियल इमेज माने ऑब्जेक्ट जो पटे इमेज सेही पटे मिरर केस रे वर्चुअल इमेज माने ऑब्जेक्ट जो पटे तार ऑपोजिट साइड रे जदी इमेज फॉर्मेशन होची दैट इज वर्चुअल इमेज सो वर्चुअल इमेज पई इमेज डिस्टेंस ता हमें पकेबा नेगेटिव आउ एठी रियल इमेज पई इमेज डिस्टेंस ता पकेबा पॉजिटिव डी आई हला किबा 1 by v जोटा कहउछो तम मानक हिसाब रे सिमिलरली फोकल लेंथ इज पॉजिटिव फॉर कॉनकेव मिरर्स बाय रियल इमेजेस okay focal length is positive for concave mirrors by real images but focal length is negative for convex mirrors by virtual images एटा को हमको ए छटा पॉइंट हमको मन रखिया पड़ियो एटा मिरर पई मु कह हैला ए स्लाइड टा मु आउथरे भलो रे जो गारी लिखि तो माने ये कर देगी माइनस कर देगी पठे दी हैला तापरे हमें आज पढिबा देखा होची समस्त को यस सर
मु जेतले फास्ट रिफ्लेक्शन विषय पढौतली सेतबेले मु कहितली देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेनोमेना occurring माने there are different properties of light depending upon what actually matter it interacts. तो मु कहितली गोटे प्लेन मिरर परफेक्टली प्लेन मिरर किबा स्फेरिकल मिरर रिफ्लेक्शन करूचंदी लाइट को, दैट इज बेंडिंग बैक ऑफ लाइट को कहे रिफ्लेक्शन. बट व्हाट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन मु कहितली गोटे एग्जांपल देइतली गोटे एयर रे पास करछि लेजर लाइट टे गोटे ग्लास सरफेस रिफ्लेक्ट करछि किंतु किशन. हेलो हेलो यस सर. इज इट ऑडिबल? हेलो. हां हां नहीं कनेक्शन अनस्टेबल देखला मुझे ते पता. सो सर कटू ट्रांसमिशन बा यू कैन माने हां साइंटिफिकली यू कैन से that it is called refraction. Okay, so mu कहतली जिंसटा. So when a light travels from a rarer medium to a denser medium, rarer medium माने मन कर air रे कोन air ता गोटे free space. Okay, समस्त क्लियरली सुबुची air is a free space, so that is called rarer medium. Denser medium पानी ता होची डेंसर पानी रे माने टाइली. अच्छा जदि हमें सॉलिड गोटे नबा, सॉलिड माने गोटे ग्लास ता गोटे सॉलिड सब्सटेंस, सो से सॉलिड ता को जदि हमें नबा तो दैट इज मोर डेंसर देन वाटर. हला जदि पानी भितरे आ ऑयल भितरे देखिबा व्हिच वन इज मोर डेंसर? ऑयल. किबा ऑयल. ओके, सो ए सब जिंस को जदि हमें नोटिस करिबा, सो देयर आर डिफरेंट माने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रो अर्थ कोन? Refractive index or speed of light in air divided by speed of light in any medium. Okay, speed of the light in air divided by speed of the light in any medium. Okay, that is refractive index of a substance. हैला speed of the light in air को हमें ये करिकरी रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू नै करी गुटे सब्सटेंस रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर करू. हैला अच्छा whenever light travels from a rarer medium to a denser medium, जेतरे एयर रो पानी भीतर को जीवो किबा ग्लास भीतर को जीवो, it bends towards the normal. हमें पढ़ी छी it bends towards the normal. it देखो इटा होची air, this is air and this is water kiba glass or any other denser material. So refractive index of air is less than refractive index of water, that is N2. refractive index रो ये माने सिंबल होची eta 1 माने आपको eta बोली कोंती किबा just N1 भी तमे कहि परि. ओके, so N1 less than N2. so जेतेबेले rarer रू denser जाउची भितर को जीवो पास करिवो सेतेबेले कोन हबो? it bends towards the normal. इटा होची मनकर सरफेस इंटरफेस बिटवीन द टू मीडिया, बिटवीन द टू मीडियम ताकू कोंती मीडियम 1 मीडियम 2. ओके, सो एटी ताकू जदी हमें से सरफेस को गोटे परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करबा, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल. हमें जानछि सो लाइट ता देखो थीटा 1 रे आछी बट टुवर्ड्स द नॉर्मल माने नॉर्मल पाखु को पळेबा, दैट इज कॉल्ड बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. ओके, so this is called whenever the light travels from a rarer medium to a denser medium, it bends towards the normal. Similarly, when the light travels from a denser medium to a rarer medium, माने पानी भितरे लाइट ता पास करूची तापर जदी एयर को पास कला गोटे इंटरफेस एम्ति आसिला जोटी एयर को पुनी पास करूची. ओके, किबा ग्लास रु पास करके पुनी एयर को जाउची. ओके, सो सेते बेले इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. देखो पानी भितरे पास करूची एंगल ता केते अछि थीटा 1, किंतु जते इंटरफेस को आसिला पुनी जते एयर अड को गला रिफ्रैक्शन हिग्री माने पास करि जिबाटा होची. रिफ्रैक्शन हेला को नॉर्मल थारु दूरे गला,
So that is that is called bending away from the normal. ये दीटा बेसिक कांसेप्ट हमें एबे पई फॉर द टाइमिंग हमें एटा मन रखियो. ओके, तापर हमें जीवा. So there are different type of refracting surfaces. I am talking today, I will talk specifically about refracting surfaces, not reflection. Reflection is separate phenomena. Reflection is separate phenomena. That is bending back of light, bending bending कोची कौन सेटा. So that is called when the light moves in the same medium after interacting with one medium. माने यदि light after interacting with matter it moves back to the same medium, तो सेटा को हमें कहबा कोन जे रिफ्लेक्शन. बट एठी हम कहूचे वी आर टॉकिंग अबाउट रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, माने कोन जोटा भीतर दे की पास करी जाउची, so that is called refraction. So a single spherical surface that refracts light can form an image. जेमते रिफ्लेक्शन केस रे गोटे इमेज फॉर्मेशन हुए, सेमते रिफ्रैक्शन हेले मध्ये गोटे इमेज फॉर्मेशन हुए. लाइट रो रिफ्रैक्शन हेले मध्ये गोटे इमेज फॉर्मेशन हुए. Images formed by refraction through surfaces of transparent materials such as glass. Glass गोटे ट्रांसपेरेंट मटेरियल, विभिन्न टाइप रो ग्लास आसे तमे देखिथिबो. गोटे गोटे ग्लास रे लाइट टा माने पूरा परफेक्टली माने तुमको मिरर टा देखा जिवो, मिरर भलिया देखा जिवो निसे, तुमको किछि इमेज देखा जिवो. बट आ भीतर मध्ये गोटे लाइट पास करूची, ट्रैवल करूची. ओके, so go plane mirror. I mean, plane mirror is also made up of glass, but we are seeing a image. Spherical mirror, they are also made of glass, but we see a different type of image like inverted, diminished. I mean, juta podile. Okay, so eguda ko mirror case hegala. But there are also different types of glass where light travels inside the medium. That means refraction hi jay, juta bending of light hi jay. Okay. So ये सब जिंस रे इमेज फॉर्मेशन हुए आइदर भितरे कि बाहर सेटा हमें पढिबा. ओके, spherical surfaces with radius of curvature r and center of curvature c. मु कहितली कोन जे गोटे एमती गोटे स्फेरिकल सरफेस अछि. देखो ई फिगर 1 रे स्फेरिकल सरफेस अछि, तो तार सेंटर ऑफ कर्वेचर टा कोडा हो? डेफिनेटली टुवर्ड्स द राइट साइड. सेंटर ऑफ कर्वेचर टा टुवर्ड्स द राइट साइड हो. रेडियस ऑफ कर्वेचर सेमती कोन हे जिवो r. ए जो डिस्टेंस टा पोल रु ए सेंटर जो डिस्टेंस टा एटा जदी हम गोटे गोल करबा एमती, सो दिस विल बी द सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेमती राइट साइड एडे जदी बेंड हिची तार सेंटर ऑफ कर्वेचर टा लेफ्ट साइड एडे रहइबो. बुझिला? सो सिमिलरली एटा हे जिवो तार r, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर. एटा में जानि छी देखली. सो लाइट विल बी emitted by a point object O. Suppose there is a object O in a medium with refractive index by index of refraction the कोndi n1. It will refract through a spherical surface into a medium of index of refraction n2. ता अर्थ कोन? Suppose एटा गोटे air, a blank space ता this is air and this let it be a glass. Okay, तार गोटे medium अछि. Okay, so जतले लाइट ता ट्रैवल करूची, सो एटा को पटे जीवा कथा, ए पटे एमती पास कर जीवा कथा. किंतु मु कोन कहिची जेतले रेयरर टू डेंसर जीवो, सो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. एटी देखो जदी सरफेस टा हमर एई भलिया, ता माने तार नॉर्मल टा को हम एमती ड्रा करबा. एई सरफेस को परपेंडिकुलर लाइन टा को हमकु ड्रा करियो पड़ियो. ओके, अच्छा लाइट टा एमती गला, बट जते बेले गोटे मीडियम इंटरफेस रे पहुंचिला, सो ए नॉर्मल bend towards the normal पटकू से कोन हला bend हला. सो एटा जदी अछि तमरो थीटा 1, एटा हे जिवो तमरो थीटा 2, माने पाखे गला towards the normal. ओके, सो एठी आसी की सी जो पॉइंट रे टच करिवो सेटा तमरो इमेज पॉइंट हे जिवो. काहे कि पोल देग्री मु साइन कन्वेंशन सब कहबी, पोल देग्री जो जिंसटा पास करिवो जो रेटा सेटा पूरा स्ट्रेट पास करिवो, सब विभिन्न साइन कन्वेंशंस अछि. ओके, सिमिलरली एटी देखो
एठी गोटे मीडियम देकरी पास से जो ग्लास मीडियम देकरी स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग मीडियम देकरी लाइट टा पास कला ओके इंटरफेस को जेते बेले पहुंचिला हमरो कोन थिला ये कोन थिला साइन कन्वेंशंस कोन थिला whenever a light travels from denser medium to rarer medium the light bends away from the normal देखो केमती जदी जाई थांदा स्ट्रेट जाई थांदा लाइट ता ताले नॉर्मल भीतर केते एंगल ही थांदा अल्प एंगल छोटो एंगल ही थांदा स्मॉल एंगल but it bended away from the normal okay so this is called refraction again but the image is formed at this point again okay so ita ame padiba ku kemti kono ame dekhiba so different type of kemti instrument theory हुए lens theory हुए मु सेटा these are single refracting surfaces गोटिए spherical refracting surface को कुआ जाए single refractive surfaces single spherical refractive surfaces so real images are formed at a distance di in the parts A and B. ये जो A and B figure देखिला, so this image formed is called real images, where the refraction directed towards the central axis. मु कोई भी आगु होला. So virtual images सेमती केमती formation होची गोटे refracting surface सेमती हमें नेले single refracting surface. अच्छा. So there is an object here. गोटे light pass कला. So light ta pass kari jiba katha emti but whenever a light travels from rarer to denser it bends kon towards the normal hala so ye towards the normal kon hala bend hala normal ta dekho tam normal ta kouthi ei pate hala so towards the normal dekho eta bodo angle heitala eta choto angle heitala semti tar jo extension ta jo image formation करछि this is virtual image बुझियला सिमिलरली एटा गोटे डेंसर मीडियम डेंसर रु रेयर जतले सपोज तमे देखियो एई बळिया फिगर एमती गोटे किछि गोटे टिके ब्लू कलर किमा ग्रीन कलर किछि सो डेफिनेटली इट इज ए डेंसर मीडियम आउ फ्री स्पेस टाको व्हाइट स्पेस टाको कहा जाय रेयर मीडियम सिंपल ओके और एयर टाको सिंपली यू कैन से तापर सेमती गोटे वर्चुअल इमेज फॉर्मूला एठी गोटे ऑब्जेक्ट गला सी गला अवे फ्रॉम द नॉर्मल हला ओके अवे फ्रॉम द नॉर्मल हेतिवा जोगु ये जो इमेज फॉर्मेशन हला ओके सो दिस इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज so there are different types of conditions where a single refracting surface can form a real image or a virtual image but in our day to day life so gote important point when the object faces a convex refracting surface when the object faces a convex refracting surface the radius of curvature is positive and when it faces a concave surface the radius of curvature is negative बुझियला ता अर्थ कोन concave mirror convex mirror जदि हमें कहिबा ओके sorry concave mirror and convex lens एठी जहां साइन कन्वेंशंस नेलो एठी कोन नेलो focal length is positive so similarly कोन radius of curvature ता कोन नैतिले similarly एठी convex lens रे focal length is positive ठीक है मु फिगर देखौची डोंट गेट कंफ्यूज्ड so प्रथमे हमें लेंस रो डेफिनेशन देखिबा ए थिन लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेसेस there are two surfaces like this or you can गोटे spherical surfaces minimum जदि थिबो गोटे spherical refracting surfaces minimum जदि गोटे इंस्ट्रूमेंट रे थिबो so that can be called as a lens गोटे देखो प्लेन
गोटे हला स्पेरिकल एटलिस्ट वन स्पेरिकल सरफेसेस जदि नथिबो ताले हमें ताकू लेंस बोली कहि परिबा a thin lens is a transparent optical medium bounded by two surfaces at least one spherical you can draw like this so there are different types of permutation combinations possible for a lens okay acha tapare kon dekhiba a lens is a transparent object with two refracting surfaces whose central axis coincide central axis ta dita ego surface ro coincide heitwa darkar eta gote surface tar central axis मन karo eta gote surface tar central axis same so central axis must coincide eta hochi middle point okay so a central axis दी जनकर समान so the common axis is called central axis of the lens janicho eta when the lens is surrounded by air light refracts from air into the lens crosses through the lens and then refracts back into the air each refraction can change the direction of travel of light jetale when a lens is surrounded by air mane eta hochi air okay air ru jetale light ta gala strike kala gote lens mane spherical refracting surface upare light refracts the air into the lens light kon karibo pass karibo lens bhitru ku puni jetebele lens ru air ku jetebele light ta jibo puni antere lens ye kon hobo light ta pass karibo bahar refraction puni hobo mane double time refraction हुए mu dekhebi kemti so each refraction can change the direction of travel of light माने bending of light माने कोन डायरेक्शन ता चेंज ही होची एटा ए डायरेक्शन ता एम्ति जीवा कथा बट एम्ति जाउची बुझियला a lens can produce an image of an object only because the lens can bend light rays but it can bend light rays only if the index of refraction differs from that of the surrounding medium सबुटु इंपोर्टेंट पॉइंट जोटा पिला माने बुझंतिनी लेंस गोटे इमेज फॉर्मेशन एथि पई करि पारुची बिकॉज़ जत्ते बेले एई कंडीशन ता सैटिस्फाई होची जोटा हम तुमु देखेली ए जो n1 n1 is not equal to n2 जत्ते बेले होची only at that condition a lens can refract or a lens can produce an image जत्ते बेले सेम medium रे गोटे light pass करूची so there is no possibility of an image okay same medium रे light pass करूची so गोटे कोठी strike करू नहीं so there is no possibility of refraction or image formation by the phenomena of refraction बुझियला so now please see these two figures so there are two types of lenses एटा कहिया दरकार नै समस्त जानिछो this is convex lens this is concave lens convex lens माने एमती बल्जी भीतरटा मोटा आ एंड्स गुडा को पतला concave माने भीतरटा माने middle portion is narrow and outer portion is wide so dita refracting surface misigi lens theory करते okay so at least one refracting surface रे भी lens theory हो सेटा हम देखिबा plano concave ए सब विभिन्न टाइप रो lens अछि किंतु for the time being there are two types of lenses that is convex lens and concave lens okay so concave रो diagram होची है convex रो diagram होची है बुझियला मु जो कहली डबल थर रिफ्रैक्शन हुए केमती हुए देखो लाइट पास फ्रॉम एयर एटा हो एयर रु जेतले इंटरफेस को टच कला लेंस ता गोटे कोन गोटे ग्लास मटेरियल ओके ट्रांसपेरेंट ग्लास किबा सेमी ट्रांसपेरेंट ग्लास सो देयर आर डिफरेंट डिग्री ऑफ ट्रांसपेरेंसी सो कि 80% लाइट को पास करे दिए ट्रांसपेरेंट माने कोन जति जो जिंस रे हमें पास कर जिवा दैट इज ट्रांसपेरेंट जो जिंस रे लाइट ता पास कर जाय दैट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट
सो केतेटा जगह रे केते परसेंटेज रिफ्लेक्शन भी हुए, केते परसेंटेज ट्रांसमिशन भी हो जाए। ओके, सो देखो इटी आसिला लाइट, whenever a light travels from rarer to denser medium कौन कहती light is always bending towards the normal, you see it is bending towards the normal। so ए भीतर टा we consider ए माने एते पतला मु सेना एटी देखौची एमती, बट जनरली जेतले तयारी हुए हमरो इंस्ट्रूमेंट गुडा को ए जो दी जन को भीतर जो डिस्टेंस टा इट इज वेरी वेरी माइनर क्वांटिटी, और यू कैन से जे तांको भीतर किछि नै, बट ओनली दैट मटेरियल इज ओनली प्रेजेंट इन बिटवीन देम। ओके, सेटा को तमे भाबनी कि जे ता भीतर गोटे किछि गोटे एयर पसि जाईछि कि अन्य किछि मटेरियल पसि जाईछि। ओके, सो देखो लाइट इज बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल हैला, तापरे एई जगह रे जेतले लाइट पहुंचिला फ्रॉम दिस पॉइंट, whenever a light travels from denser to rarer, it is a dense material, it is a lighter material or rarer material, bends away from the normal हैला। एटा ए लाइट टा एम्ति पास करि थांता, बट इंटरफेस को जेहेतु कि टच कला एयर को आसुची, सो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। देखो एटा स्मॉल एंगल, इट इज ए ग्रेटर एंगल, बुझियला? इफ एनीवन कांट अंडरस्टैंड प्लीज से मी, जदि के बुझी पारुन दया करी कि कुह, मु आउ थरे एटा को रिपीट करबी ना, ए बहुत लेंदी चैप्टर एटा। समस्तंकर होउची बुझी होउची? Sir. Okay, so similarly, so these are this is the phenomena। हमें जनरली हमें जेतले बही रे डायग्राम देखु हमको देखा जाय कोन एम्ति लाइट टा पास कला ए भितरु पळे आछी, किबा ये कन्वर्जिंग, एटा कोनती कन्वर्जिंग लेंस, it converges light but it diverges light, concave lens diverges light and convex lens converges light, दी जन को दीटा लाइट को मिसई दबा, सो दैट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग। देखो एटी गोटे पास कला लाइट ताको आनी करी एठी की छाडला, एठी गोटे पास कला लाइट ताको आनी के एठी छाडला, सो दिस इज कॉल्ड कन्वर्जिंग, मिसई दोची, कोइंसाइड करोची, बट एठी कोन अवे फ्रॉम पळोची, एठी कोन पय अवे गला। सिमिलरली देखो हम देखिबा एठी गोटे रिफ्रैक्टिंग सरफेस, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस अछि, लाइट पास करूची, whenever light travels from air to denser medium, light bend towards normal। देखो नॉर्मल को पटे केमति ड्रॉ हेची, नॉर्मल पाकु को पळेची, पुणी एठी टच कला ए लाइट टा एमति जीवा कथा हैला, एंगल टा छोटो एंगल बट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, जेते डेंसर रु रेयर जीवो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, सो बड़ एंगल रे पास कर गेला। सिंपल, वेरी सिंपल। ओके, so this is converging and this is diverging, कोनती diverging lens by concave lens, diverging lens by concave lens। ओके, अच्छा आ गोटे जिंस सब बेले मन रख, ए स्लाइड टा देखो किबा जदी के लेखुचो लेख जेमति तुम पारुचो, यू कैन रिमेंबर दिस वन। ये जो सेकंड फिगर दीटा हम करिछि, एटा आरो जूम्ड वर्जन, ए दीटा को जूम वर्जन। सो ए जो एटा गोटे आ एटा गोटे, ए जो दीटा फिगर करा हिछि, तो ए जो दीटा फिगर, एटा गोटे और एटा गोटे, एठी गोटे जिंस देखो, नोटिस कर, एटा होछि ए फिगर रो, एटा होछि फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस, अच्छा आर सर्कल टा को आडू जाउछि, एमति जीवो आर सर्कल टा, तो तार सेंटर ऑफ कर्वेचर टा देखो C1, एठी लिखि छिमु C1, बुझियला? सिमिलरली ए जो सेकंड सरफेस, ए जो दिस इज सेकंड सरफेस, तार सेंटर टा को पटे, लेफ्ट साइड रे, सो एठी C2 लिखा हिछि, देखो एठी C2 लिखा जाइछि। ओके, सिमिलरली यहाँ पे सेकंड फिगर में सेंटर किस तरफ है, राइट लेफ्ट साइड में है, सो C1 एठी लिख ली।
आउ ए पट लेंस टा सेकंड सरफेस में राइट साइड आड़ को सेंटर सो C2 इट सेंटर ऑफ कर्वेचर को आखि बुझी कि जो पटे गोल टा बुली थिबो सेही पटे तमर हबो कोन सेंटर ऑफ कर्वेचर आखि बुझी की पकेइबो बुझिला आ गोटे जिंस सब एटा मन रखिबो जदि ए पटे C2 लिखिछ ए पटे हे जीवो F1 फोकल लेंथ 1 किंबा फास्ट फोकस एटा को कोनती सेकंड फोकस जो पटे C1 से पटे आखि बुझी की उल्टाटा पकेइबो opposite to center of curvature opposite to C so there you get F opposite to C F एटा मन रखो if there is C1 so definitely that side में F2 आएगा और if there is C2 उस साइड में F1 आएगा यहाँ पे भी वही हाल है देखो एटा मन रखिया पे सुविधा सेति में मु कहली again and again I am saying so we are talking about reflection not refraction sorry we are talking about refraction not reflection so this is a different phenomena so that is why एटा को मन रखिया को पड़िबो हमको एटा रिफ्लेक्शन नुह एटा रिफ्रैक्शन मिरर और लेंस भितरे बहुत कंफ्यूजन हुए पिला कॉनकेव कन्वेक्स ना समान भलिया किंतु प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट साइन कन्वेंशंस आर डिफरेंट ओके साइन कन्वेंशंस कोन नेबा आमी मु देखैबी तुम आ गोटे जिंस मन रख मु कहबी एटा तो कहिनी कहबी परे सो एनीवे देखिबा हाँ so these are the basic differences this is the basic difference real images are formed on the same side of the incident light for mirrors mirror में क्या बोले थे mirror में ऑब्जेक्ट जिस तरफ है इमेज अगर उसी तरफ है so for that you call it real image पर लेंस में ऑब्जेक्ट जिस तरफ है इमेज अगर ऑपोजिट एंड में है so this is called real properties are different in a lens as compared to mirror are you getting my point hello yes sir so real images are formed on the opposite side for refracting surface and lens refraction जो थी होची कि refracting surface और lens कथा जितने हम कथा होचे so real images are formed on the opposite side and real images are formed on the same side okay इटा गोटे बेसिक पॉइंट हमको मन रखिया पड़िबो हेलो हेलो यस सर सुबुजी सर म्यूट हे जितला जस्ट अ सेकंड हेलो क्लास रे अछि रे कोन कहू छु की हाँ मते पठे दे मु मगे दे so
So this is the basic important difference between the mirror and lens. Tapare what are the different other sign conventions which we have to use? So let us see. Sign conventions for spherical lenses. Okay. The radii माने कोन center of radius of curvature जोटा पूछे हैला. The radii are positive if the corresponding centers of curvature is on the real side. जदि real side रे अछि center of curvature ताको हम positive नबा, and if it is negative if it is on the virtual side. ये जो real और virtual मु जो कहूनी, ये जो real virtual टा सब बेले image को देखि करी हमें कहू. ओके, सो सेति में कंफ्यूज केबे हबनी. सो आर टा को हमें पॉजिटिव नबा जदी corresponding center of curvature टा real side रे अछि, and r टा को हमें negative नबा जदी it is on the virtual side. Similarly, object distance is positive if object distance is positive. It would important point there. Object distance is positive if the object lies on virtual side of the lens. It would important point. तापरे आउटे जिंस मु एटी देख पूरा क्लियरली मु एटा को लिखि देजी. कन्वेक्स लेंस रो रियल साइड एटा, कॉनकेव लेंस रो मध्ये रियल साइड राइट साइड. ओके, आउ लेफ्ट साइड टा एटा होची वर्चुअल साइड, एटा मध्ये सेटा हे गेला तमर कोन वर्चुअल साइड. एटा को सब बेले मन रखो. ए डायग्राम एंड ए जो साइन कन्वेंशंस मन न रखिले एपट सब हे जो सब जिंस ହେଲା. ताले इमेज को देखि कि वर्चुअल साइड रियल साइड निया जाय. सर इमेज को देखि कि वर्चुअल साइड और रियल साइड ना मु सेटा कहली पर एटा मिरर नुह, एटा लेंस, एटा पूरा माने उल्टा हे जिवो. रियल इमेजेस आर फाउंड ऑन ऑपोजिट साइड फॉर रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ द लेंस. ऑपोजिट साइड बोली लिखिला माने ऑब्जेक्ट जो पटे इमेज सेही पटे नुह, ऑपोजिट साइड रे हबो. मु कहबी हैला. यस. The object distance is positive if the object lies on the virtual side of the lens. Similarly, the image distance is positive if the real image lies on the real side of the lens, and negative if it lies on the virtual side of the lens. Image distance is positive if the real image lies on real side of the lens, and negative if it lies on the virtual side of the lens. Similarly, magnification is negative if both image distance and object distance are positive. Magnification is negative if both image distance and object distance are positive. Image distance, object distance को हमें कोठू नबा एई सब एई जो तीनटा प्रथम तीनटा पॉइंट कहली एईटा को बेस करके हमको नबा पड़े. ओके, तापरे सेमती केते गोटे साइन कन्वेंशन. ए रे दैट इनिशियली passes through or when extended appears to pass through the focal point f1 will image from the lens parallel to the central axis. Okay, the focal point देकरी जदी गोटे f1 देकरी जदी रे पास करची after refraction से कोन हबो will emerge from the lens parallel to the central axis. Similarly, a ray ए जो जिंसटा तमे जदी एटा को उल्टा भागे नबो एटा एमती उल्टा जीवो हला. मु देखेबी आगु केते गोटे फिगर अछि. ए रे that is initially parallel to the central axis जेम जे मिरर रे नउतले that will pass through the second focal point f2. So remember these two figure always. ये जो f1 f2 रे कंफ्यूजन बहुत हुए तो सेति में मु बारंबार कहिची c1 c2 टा को गोल टा जो पटे सेही पटे आगे पकेइबो, तार ऑपोजिट गुडा को हम पकेइ दबा f1 f2. Okay, tapare a ray that is initially directed towards the center of the lens will emerge from the lens with no change in its direction because the ray encounters the two sides of the lens where they are almost parallel. Okay, center of the lens ए देखो एटा होछ center of the lens. एटा को हम कहउछे center of the lens किबा जेमति मिरर रे हम कहउतली पोल सेमति सेंटर. एई जो रे टा पास करछि सेटा आउ कोनोसी प्रकार रो डेविएशन होबनी, सेटा सम्मान पैरेलल जीवो. ओके, एईटा गोटे बेसिक माने जो कहली टेबल मु तम मानु कहितली गोटे टेबल बने पे केई गोटे भी मते पठेलनी टेबल मिरर पई.
सो एनीवे सेटा तो इमेज आ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ए सब मन रखिया पे कहतिली हैला तो के पठेलानी तो एटा गुटे देखो सेमती स्फेरिकल मिरर आ लेंस भीतर रो जो साइन कन्वेंशंस को मु गुटे टेबल माध्यम रे आको देछि हैला साइन कन्वेंशंस spherical mirror positive focal length टा कोन positive for concave mirror negative for convex mirror spherical mirror case रे but lens रे कोन हैला total उल्टा हैला positive for converging by convex lens and negative for diverging by concave lens देखो केमते उल्टा होची सिंबल टा केमते उल्टा होची देखो बुझिला सेमते ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माने कोन do बा तमे कोन लिखुछ सेटा को u positive if the object is in front of the mirror and negative if the object is behind the mirror similarly it kon naba negative if the object is to the left of the lens by real object ta jodi real object taku I mean naba kon negative object distance ta and positive if the object is towards the right side of the lens by virtual object ei dekho ei virtual side ta kota eta tike mu bhul likhili eta so anyway a point ta ko I'll just confirm it okay eta tike mu star mark douchi so negative if the object is to the left of the lens that is left of the lens re kemti real object ho oh yes I'm talking about object I'm not talking about image okay so ame jodi object विषय कथा होचे it is negative if the object is to the left of the lens and it is positive if the object is to the right of the lens मु से कहूचे सब बेले लेंस और मिरर रे कंफ्यूजन हुए तो जेमती मु कहली जे मिरर रे कोन हुए ऑब्जेक्ट जो पटे इमेज जदी सेही पटे तामे ताको कहबा कोन रियल इमेज किंतु एठी पूरा उल्टाटा लेंस हैला similarly image distance it is positive if the image is in front of the mirror by real image and it is negative if the image is behind the mirror by virtual image okay similarly image distance is positive for a lens if the image is towards the right side of the lens by real image by a real object and it is negative if the image or virtual image formed to the left side of the lens by a real object Hala? Don't get confused I am talking about image okay so similarly magnification is positive for an image upright jodi upright object jemti image jodi semti achi so this is positive for image upright and jodi inverted achi object jo jemti image jodi ulta hegala negative এটা भी सेम जिंस এটা এই সাইন কনভেনশনস টা সেম রহিব ওকে गोटे एटलिस्ट मन रख तार उल्टा टाको समान लिखि दबो लेंस पे यदि मिरर पे मन रखुछ यू रिमेंबर फॉर मिरर यू कैन पुट इट व्हाइल सॉल्विंग द लेंस किंतु कॉनकेव कन्वेक्स रे पुनी अछि एटा जेंति फोकल लेंथ हम स्पेसिफिकली कहूची एटा टिके प्रॉब्लम हुए एटा को मध्ये मन रखिया बाकी सब सेम अछि पॉजिटिव नेगेटिव इन फ्रंट ऑफ द मिरर बाय लेफ्ट साइड राइट साइड ई सब जो जिंस so that you can adjust आमे करिवा हम जेतले डायग्राम उडा करिवा आस्ते आस्ते आउरी क्लियर हे जिवा बुझिला समझ बुझिलो अच्छा आ गोटे जिंस मु कहबी
हमें जंती मिरर फार्मूला लिखते 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f, right? Jemti what is lens formula বা thin lens formula? Anyone who can say what is thin lens formula? Das ko Rajiv Das. Sir, 1 by v minus 1 by u. Yes, sir. टिके चेंजेस आसला हला Yes. एटा मन रखिबा एटा सहित हमकु कोन मन रखिया पड़िबो this diagram and this sign conventions, this we have to always remember, okay? नहले ए टेबल द्वारा मन रखो. So there are different conditions. जेमते मु कहउतली मिरर केस रे सेमते हमें देखिबा कन्वर्जिंग लेंसेस बा कन्वेक्स लेंस आकु कोन कहउची कन्वेक्स लेंस. So converging lenses can give either type of image, माने they can give real or images. But diverging lenses can give only virtual images. Can give only virtual images. Okay. जेतले ऑप्शंस रे पडुची हमर जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रे पडुची हमें सब एई सब जिंस जदी मन रखि दिया गोटे जिंस गोटे क्वेश्चन देइची तीनटा एक ऑप्शन कॉनकेव लेंस पई देइची कॉनकेव लेंस पई देइची सपोज गोटे क्वेश्चन the image formed is real, diminished and erect. Image formed is real amako samako kon gote deichi the image formed is real tinita ego hoboni kebe bi hoboni because concave lens re real image totally hobo nahi. So एठी जदि वर्चुअल ऑप्शन टा देइची आखि बुझी करे एटा टिक करतो बुझिला. तो एइगुडा केते गुडे जिंस हमको सब बेले माइंड रे रखी करी चले पड़े. ऑप्टिक्स रे बहुत क्वेश्चंस आसे तमरो जेते सब एंट्रेंस एग्जामिनेशन रे एई सब एई स्पेसिफिकली रे ऑप्टिक्स रु के मिनिमम 3-4 क्वेश्चन बाजिथि हला. सो एटा को हमको कंसीडर करे बट हाँ जदि कन्वेक्स लेंस देइची तबे रियल इमेज किबा वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन हे परियो तो सेही कंडीशन टा को हम देखियो पड़ियो ऑब्जेक्ट टा कोठी अछि इमेज टा कोठी फॉर्मेशन होची से कथा आसीयो. बट जदि कॉनकेव विषय रे देइची एवं रियल देइची कोठी भी ऑप्शन रे रियल तो हबो ही नै तो तीनटा को काटी दो बुझिला. तो these are the different tricks while you can solve the questions. So when an object, so let us now talk about convex lens specifically. Convex lenses. So when an object is placed at infinity, the real image is formed at the focus. When the object is placed at infinity of a convex lens, the real image is formed at the focus. The size of the image is much smaller than the size of the object, or point size image you can see. देखो रे पास कला साइन कन्वेंशंस कोन कहूची आफ्टर striking the lens it should pass through the f2 साइन कन्वेंशन कोन कहला इट. A ray that is initially parallel to the central axis of the lens will pass through the second focal point f2. देखो second focal point f2 को pass कला
किंतु f1 f2 को f2 टाको हमें केमती ड्रा करिवा कहिछि हला कहिछि तो सेमती से हिसाब रे हमें ड्रा कर परिबा किंबा इथे गोटे जिंस हम बुझी पारुनी डायग्राम से भूल देछि ना को ओके इथरे जदि भी किछि चेंजेस थिबो मु नेक्स्ट क्लास रे कहबी सो दीज आर द डिफरेंट डायग्राम्स व्हिच यू कैन गो फॉर इट ओके बट ओवरऑली तमरो रिजल्ट चेंज होबनी बट से जो साइन कन्वेंशंस टाइम आउट के सर एटार बेटर तो भूल अछि भाई हां एटा भूल अछि बद मते लागुछि लाइक एटा उटे कॉपी पेस्ट माइलटा उठु उठाई छी सो देखियो मु कहबी हला तो इटी जो C1 C2 टा सेटा उटे चेंज हे गेला ले मते लागुछि सो दिस कैन नॉट बी C2 दिस शुड बी C1 राइट this should be C1 so anyway so similarly you can when the object is placed behind the center of curvature when the object is placed behind the center of curvature the real image is formed between the center of curvature and focus the size of the image is same as compared to that of the object. The size of the image is the same as compared to that of the object. The mirror विषय विभिन्न image properties विषय कहली so these are the different types of image formed due to convex lens. Convex lens. ये तार साइन मैं ठीक अछि सेते किछि भूल नै नी कथा होछि कोन ये तार सिंबल एवं ता हिसाब रे तार साइन कन्वेंशन नै छी गोटे जिंस कोन मु मने कर कहबी जे मु एई पट डायरेक्शन टा को नेगेटिव ही नेबी सो नो वन कैन फोर्स मी टू टेक इट पॉजिटिव मु जदी एईटा को नेगेटिव नउची सो डेफिनेटली आई एम बाउंड टू टेक दिस साइड इज पॉजिटिव बट इफ आई एम टेकिंग दिस साइड पॉजिटिव सो आई एम बाउंड टू टेक दिस साइड नेगेटिव सो ये ता हिसाब रे सिंबलाइज करिछि जिंसटा को किछि भूल नाही एथरे मु जो तुमको रूल लिखिछि तमे सेही रूल अनुसार भी जदी पकेबो यू विल गेट दिस टाइप ऑफ ग्राफ और दिस टाइप ऑफ इमेज बुझिला गिरिजा यू कैन ट्राई ओके ते देखो मु जोटा कहिछि सेटा ठीक अछि भूल जे भूल थियो हमें पुणी अंतर पढिबा किछ असुविधा नै मते लागुची जे कोनोसी प्रकार भूल हबनी कने नाकटा को तुम एमिति धरो सेमिति धरो एनीवे इट इज माने सिमेट्रिकल so this type of image but the properties of the image should be this one the real image is formed between the center of curvature and focus properties should be always mane same the size of the image is same as compared to the size of the object eta madhya हमको करियो पड़िबो हला similarly when an object is at the center of curvature when an object is at the center of the curvature the real image is formed at the center of curvature the real image is formed at the center of curvature the size of the image is same as compared to the size of the object अच्छा गोटे जिंस नोट कहली मु जोटा कहउतली तुम जो कहउछ भूल अछि बोली ये कोन करिछि सुनो ये एई सरफेस टाकू फर्स्ट सरफेस नैछि ये एई सरफेस टाकू फर्स्ट सरफेस नैछि एटा को नैछि सेकंड सरफेस सेही जिंस ये माने एई जो फिगर रे से तार करछि ता हिसाब रे से तार बनेछि तो किछि कंफ्यूज होबार नै एनी हाउ हम सब बोले जानिछे माने f टा जेति की तार डबल जदि 2f नबा सो 2f टा होची हमर सेंटर ऑफ कर्वेचर so that we have to remember always तो किछि भाबियार नै so when an object is at the center of curvature the real image is formed at the center of curvature the size of the image is same as compared to the size of the object लिखला
So when an object is placed in between the center of curvature and focus, in between the center of curvature and focus, एठी हमें object को रखिले. A real image is found behind the center of curvature. A real image is found behind the center of curvature. The size of the image is smaller than the. कौन है? इटा तो ठीक अच्छी साइन सेम हला. How this is possible? No. Size of the when the object is placed in between the center of curvature and focus, the size of the image is larger. The size of the image is larger than that of the object. Double अच्छी है. The size of the image is larger than that of the object. That you take. Okay. So when an object is placed at the focus, when an object is placed at the focus, a real image is formed at infinity. कहीं देखो कोठी मीट करूनी. So एटी मीट करूनी माने से डेफिनेटली आमे से जायकी गोटे कोठी गोटे पॉइंट रे इन्फिनिटी रे निश्चित मीट करियो बोली हमर आशा. तो सेति पय ताको इन्फिनिटी कहै जाय. So a real image is formed at infinity. The size of the image is much larger than that of the object. कहीं ये देखो image टा जदी एटू एमती ड्रा करियो somewhere एटी गोटे कोठी फॉर्मेशन much larger than that of the object. Okay, I mean sequentially जेमती mirror case रे एटी देखते ले तापर center of curvature तापर मझी रे तापर एटी सेमती हमें आगु टिके आसीबा. Similarly, when an object is placed in between the focus and pole by the center of the lens, focus and center of the lens. Convex, we are talking about convex lens. A virtual image is formed. A virtual image is formed. The size of the image is larger than that of the object. The size of the image is larger than that of the object, but image ta kono? हला वर्चुअल इमेज हला. सेति पय मु कहितली कन्वेक्स लेंस रे देखो सबुडा केस रे देखो रियल इमेज फॉर्मेशन हला. एठी रियल इमेज, एठी मध्य रियल इमेज, एठी भी रियल इमेज फॉर्मेशन हला, एठी भी रियल इमेज फॉर्मेशन हला, एठी भी रियल इमेज फॉर्मेशन हला. बट ए गोटे केस रे जते सॉरी ए गोटे केस रे केवल वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन है. जतले सेंटर आउ फोकस भीतर रहिबो सेतेबेले वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन. हला सो समझते आमे जो साइन कन्वेंशंस पढ़ी छे तमे जदी सिंबल गुडा को कंफ्यूज होवर नहीं तम जदी यू कैन यूज दिस टाइप ऑफ साइन कन्वेंशंस. ओके, तो एटा जोटा मु कहि छि रियल साइड वर्चुअल साइड एटा को बेस करी कि किबा ए जो 6टा पॉइंट को बेस करी कि यू कैन डू दैट वन. So definitely you are going to get the same answer. Okay. So today's class is over. Okay, so we can meet on Friday. So I'll again discuss about this lens. जदि किसी confusion थिबो कहबो हमें आगु पढिबा. आ टेबल बनाओ समस्ते निजे कॉपी रे डायग्राम करी को ଗୋଟେ टेबल बनाओ. अगर मिरर रो मते पठाओ, मते ग्रुप रे पठाओ मिरर रो आज जोटा साइन कन्वेंशंस कहली साइन कन्वेंशंस तो नोटिस करिवो ही. ता बादे जहा सब जो तमरे इमेज रो प्रॉपर्टीज माने को जगह रे ऑब्जेक्ट रहले कोठी इमेज फॉर्मेशन होची तार प्रॉपर्टीज कोन अनमैग्निफाइड, इरेक्ट ना डिमिनिश्ड, वर्चुअल इमेज ना रियल इमेज एटा मते को हला. सो